नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपका डीएन इंग्लिश में हृदय से स्वागत है। आज मैं आपको वेयर वी यूज टू एंड वेयर वी यूज़ वुड, पहले तो हम आपको ये बताएं, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं यूज टू और वुड का। दोनों को, ये जो दोनों यूज टू एंड वुड दोनों यूज़ किए जाते हैं टू टॉक अबाउट थिंग्स इन द पास्ट। पास्ट की चीज़ को बताने के लिए किए जाते हैं। वो थिंग्स विच वी डोंट डू नाउ, जिसको अब हम नहीं करते हैं, वो चीज़ें विच आर नॉट हैपनिंग नाउ, जो चीज़ें अब नहीं हो रही हैं। अब देखिए, मैं एक यूज टू का आपको एग्जांपल रिमाइंडर कराता हूँ। मैंने एक वीडियो यूज टू के ऊपर बनाया है, आप देखेंगे तो आपको ये वीडियो और आसानी से समझ में आएगी। यूज टू, मैं एक सेंटेंस यूज टू का बना रहा हूँ। सपोज रॉबर्ट स्मोक्ड रेगुलरली फॉर सम टाइम इन द पास्ट। नाउ आई एम गोइंग टू यूज टू। रॉबर्ट यूज टू स्मोक। नाउ in other way, Robert smoked for some time regularly in the past. Robert used to smoke. Robert cigarette पिया करता था. Robert was a smoker. Robert smoker था, but now he isn't. तो used to और would दोनों का प्रयोग हम पास्ट की कोई आदत बताने के लिए करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कहाँ पर हम यूज टू को यूज़ करें और कहाँ पर वुड को यूज़ करें, क्योंकि दोनों ही पास्ट की हैबिट और सिचुएशंस को बताते हैं। और मैंने तमाम यूट्यूब वगैरह देखे, लेकिन मुझे इसका आंसर नहीं मिला। टुडे आई एम गोइंग टू मेक यू क्लियर वेयर यू विल यूज टू एंड वेयर यू विल यूज़ वुड। नाउ this is my definition. I would like my students to write this definition in their minds. What is definition? Because English grammar can be taught only in English. I will explain all the things in Hindi. You need not worry. But I will just give definition in English and then I will translate into Hindi. Here is a definition. We only use would to describe actions or situations that were repeated many times again and again and again in the past. Yes, here is an example. When she was at school, she would play kho every Monday. When she was at school, जब वो स्कूल में थी, she would play, खेला करती थी Kho every Monday. So now just watch. Playing Kho every Monday was repeated again and again, many times every Monday. That's why here would is appropriate. Second sentence, try to understand. Second sentence, when he was at university, sorry, give me a chalk. Yes, when he was at university, he would sleep until noon at the weekends. जब वो यूनिवर्सिटी में था, he would sleep, वो सोया करता था until noon, दोपहर तक, at the weekends, weekends के दिनों में। तो देखिए here what I have used, would. Why? Because he is sleeping until noon at the weekends went many times again and again and again in the past. Now third sentence, I would always forget my homework until the teacher threatened to punish me. What is the Hindi of this sentence? I would, मैं भूल जाया करता था, always, हमेशा, forget my homework, अपना होमवर्क करना, until कब तक, the teacher threatened to punish me,
जब तक टीचर मुझे धमकी नहीं देता था, धमकी नहीं मिलती थी पनिशमेंट की, तब तक. नाउ फोर सम सेंटेंस. शी वुड ऑलवेज कम फॉर क्रिसमस. शी वॉज अपॉइंटेड ऑन बॉर्डर, बट शी वुड ऑलवेज कम. लेकिन वो हमेशा आया करती थी फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए. तो यहाँ पर आपको सिर्फ समझना ये है कि वी ओनली यूज, दिस इज माई डेफिनेशन, प्लीज नोट दिस डाउन इन योर माइंड. वी ओनली यूज वुड टू डिस्क्राइब एक्शंस और सिचुएशन दैट वर रिपीटेड many times again and again and again and again in the past. Now, I am 100% sure that you all must have understood that in such sentences, would is used. Now, I am going to tell you where used to is used. Yes, मैंने आपको बताया कि would कहाँ पर use होता है. अब देखिए used to कहाँ पर use होता है. This is my definition. I want you to write in your mind or in somewhere else, but have this in your mind. Used to is good for any action or situation that continued for a period of time in the past, including repeated actions and situations. I have added this because British grammarians say that where would is used, there used to can be used, because including repeated actions and situation. लेकिन जहाँ पर कई बार देखिए, now here I used to live in Kanpur but now I live in Rewa. My living in Kanpur was a repeated action or permanent, went for permanent for some time. Just try to understand. In would, action gets repeated many times again and again and again. But here I used to live in Kanpur. My living in Kanpur was not repeating. वो नहीं रिपीट हो रही थी. Just try to understand. यहाँ पर would कभी नहीं लग सकता. Clear? Second sentence. She used to hate her job until she got promotion. Did she hate her job many times? No. It was permanent temperament. So no, this was not a repeated action. So 100% there would be used to. You cannot replace this used to from would. So suppose in such sentences you can have two options, would and used to. At that time you must select, you must opt used to. Now third example. He used to live in a small village but now he lives in Bombay. He used to live in a small village. वो स्मॉल विलेज में रहा करता था. तो ही इज लिविंग इन स्मॉल विलेज. डू यू थिंक रिपीटिंग, क्या रिपीट हो रही थी? नो. सो इन दिस सेंटेंस देयर विल बी used to. He used to live in a small village but now he lives in Bombay. लेकिन अब वो बॉम्बे में रहता है. His living was परमानेंट. वहाँ कोई मैनी टाइम्स और अगेन एंड अगेन वाली बात नहीं है. देखिए यहाँ पर, दिस बिल्डिंग इज नाउ अ होटल. इट यूज टू बी अ सिनेमा. ये सिनेमा हुआ करती थी. यहाँ पर कभी भी वुड नहीं लग सकता है. फिफ्थ सेंटेंस. देयर यूज टू बी 4 cinemas in my town, in my Rewa, but now there is only 1. So यहाँ पर भी हम वो यूज टू की जगह में ये देयर यूज टू बी, यहाँ हम वुड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं. तो आपको मैंने सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि वुड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई चीज़ वेंट मैनी टाइम्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन इन द पास्ट. बट वी यूज टू व्हेन समथिंग वेंट रेगुलरली फॉर some period in the past, regularly without break, no many and again. Here is one example. Before going to bed, my mother would narrate me a story. My mother would narrate me a story always before going to bed. जाने के पहले सुनाया करती थी. यहाँ पर आप used to का भी प्रयोग कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने अपनी डिफिनेशन में. Just note it somewhere and just you can claim your teacher that where would is used
there you can use used to, but there are many sentences where used to is used, वहाँ पर आप would का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अभी जितने भी मैंने वुड वाले सेंटेंसेस आपको अभी वुड वाले उसमें लिखे हुए हैं, उन सब उन सेंटेंसेस में आप यूज टू भी उसको कर लेंगे तो वो सब सही है। अब मुझे आशा है कि आपको यूज टू कहाँ पर यूज़ किया जाता है और कहाँ पर वुड यूज़ किया जाता है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट्स में कुछ अपने भेजें ताकि मेरा थोड़ा उत्साहवर्धन हो और मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताता रहूं। ये जो मैंने जानकारी दी है, ये जो 2 डेफिनेशंस मैंने आई हैव मेड यू राइट जो मैंने आपको लिखवाई हैं, नोट देम इन योर माइंड इन योर फेयर कॉपी बिकॉज यू विल नॉट गेट दीज 2 डेफिनेशन इन एनी ग्रामर एंड जस्ट you must have understood. Thank you very much.